आज में पढ़िबा आरए कॉपी मेथड जोटा हमें प्रीवियस क्लास से डिस्कस करते आरए कॉपी मेथड तो सेटा हमें डिस्कस करबा तो केमती हमें गोटे आरए एलिमेंट को आ गोटे आरए एलिमेंट भीतर हमें कॉपी करके देखिबा। INT A 1 2 3 4 5 6 INT B 10 20 30 40 50 60 70 80 एटा में आरए एलिमेंट हमें डिफाइन कले तो सिस्टम डॉट आरए कॉपी मेथड एटा में यूज कले सिस्टम डॉट आरए कॉपी मेथड तो बाय यूजिंग ऑफ सिस्टम आरए कॉपी मेथड हमें गोटे आरए एलिमेंट को आनी की कॉपी करके आ गोटे आरए एलिमेंट रे हमें स्टोर करिवा। तो INT ए आरए रो को इंडेक्स रो कॉपी करिवो ना से 1 इंडेक्स रो कॉपी करिवो माने ए टू कॉपी करिवो ए जगह ए आरए रो 1 इंडेक्स रो कॉपी करिवो पेस्ट करिवो कोठी बी आरए रो 2 इंडेक्स रे कॉपी पेस्ट करिवो बी आरए रो 2 इंडेक्स 0 1 2 अप टू व्हिच एक्सटेंड्स आरए डॉट लेंथ -1 माने आरए रो लेंथ एठी केते रहला आरए रो लेंथ हला हमर 5 हला एक्सक्यूज मी जे सर पॉइंट एक कहबे फर्स्ट रो एटा होची हमें आरए कॉपी मेथड हमें यूज करूचे ओके। आरए कॉपी मेथड एठी हमें यूज करिबा बा ए आरए रो एलिमेंट को आनी कि हमें बी आरए रे स्टोर करिबा। तो आरए को कॉपी करबा को हेले हमें यूज करिबा सिस्टम डॉट आरए कॉपी मेथड एटा यूज करा हमें आरए टा कॉपी कोड करिबा हमें कॉपी करिबा ए आरए रो 1 इंडेक्स रो एठू कॉपी करिबा ए आरए रो 1 इंडेक्स एठू कॉपी हो पेस्ट करा हबो कोठी बी आरए रो 2 इंडेक्स रे पेस्ट हबो माने 0 1 2 एठी पेस्ट करा हबो ए आरए रो 1 इंडेक्स रो कॉपी करा हबो बी आरए रो 2 इंडेक्स रे पेस्ट करा हबो जेते बेले से मु कॉपी करिवि तो कोठू को जाय कॉपी करिवि माने जेहेतु मु गोटे एलिमेंट एठू स्किप करी आसीची ओके माने एठू मु स्किप करी आसीली गोटे एलिमेंट स्किप कर देली तो आउ लेंथ तो लिखिबेनी तो जदी लेंथ लिखिबे आरए रो लेंथ केते अछि 6 अछि एठू तो आउ 6 टा एलिमेंट नै 1 2 3 4 5 अछि तनो लेंथ -1 लिख देबे लेंथ -1 हे गले 5 टा एलिमेंट रहला तो से कॉपी करिवो कोठू एटी 2 रु ने की 6 जाय कॉपी करिवो कॉपी करके स्टोर करिवो को जगह रे ना हमर बी आरए रे स्टोर करिवो तो मोर रिजल्ट कोन आसीबो 10 20 10 20 देन 0 1 2 3 4 5 6 देन 80 एवढी मते शो करिवो।
10 20 2 3 4 5 6 then 80. Okay, बुझियला प्रोग्राम ना बुझियला ने सर ठीक है देखो एटा हला INT A 1 2 3 4 5 6 एटा हला मोर सोर्स आरे माने मु एई आरे रो एलिमेंट गुडा को कॉपी करके कोठू पेस्ट करिवे ना बी आरे रे पेस्ट करिवे तो आरे टा को कॉपी करबा को हेले मु यूज करबी system.array copy मेथड system.array copy ए आरे रो 1 इंडेक्स रो मु कॉपी करबी 0 1 योठू कॉपी करबी ए आरे रो 1 इंडेक्स रो कॉपी करबी पेस्ट करबी कोठी बी आरे रो 2 इंडेक्स रे पेस्ट करबी 0 1 2 एटी पेस्ट करबी तो एठी जो पेस्ट करबी तो मु कोन लिखिबी ए माने को जाय मु कॉपी करबी a डॉट लेंथ -1 एठी मु लेंथ -1 काहे की लिखिली कारण मु कॉपी करूची ए जगह रो मु जदी लेंथ लिखिबी ताले कोन हबा आरे रो लेंथ केते अछि 1 2 3 4 5 6 किंतु एठू जते बेले मु कॉपी करबी ताले मोर आरे रो लेंथ कमी जीवो गोटे तेनु एठी मोर कोन लिखा हबो ना लेंथ -1 लिखा हबो गोटे कमी जीवो तेनु एठी लिखा हला लेंथ -1 ताले मोर रिजल्ट कोन आसीबो मु कोडी पेस्ट करबी बी आरे रो 2 इंडेक्स माने 0 1 2 एटी पेस्ट करबी ताले मोर रिजल्टेंट कोन आसीबो 10 20 10 20 2 3 4 5 6 देन 80 बुझियला Yes, sir. स्नेहा सोलक्ष्मी सुदीप्ता रक्षी बुझियला Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नेक्स्ट कांसेप्ट हमें जीवा oops concept part 2 it is very important part oops concept part 2 so I move to that part so how do I design class for use my program आमे जते बेले घर बनेबा ता पूर्वरु आमे गोटे कोन करूचे ना गोटे आर्किटेक्ट डिजाइन आमे बनौचे से डिजाइन द्वारा आमे कोन करूचे ना आमे चेक करूचे कोठी मोर बेडरूम रहिबो कोठी वर्शिप रूम रहिबो किचन रूम कोट रहिबो वॉशरूम कोट रहिबो मास्टर बेडरूम केते साइज रहिबो so I define or I create that building based upon that map से मैप थ्रू रे मु आपको डिसाइड करूची similar way when you are designing a classes so after you are getting a program when you are working in a corporate part or you are working in a developing company तो से जगह रे तुमको गोटे वर्क असाइन हो that you have to do this application तमे ए प्रोग्राम टा बा ए सॉफ्टवेयर टा बना जेतल मु ए सॉफ्टवेयर टा बनेबी फर्स्ट ऑफ ऑल मु देखिबी जे मु कहा पई प्रोग्राम टा बनेबी
आउ से प्रोग्राम रे मो कौन फीचर रहिबो तो यही सब आमर क्लासेस को बेस करके आमे क्लास सब बनेबा गोटे प्रोग्राम रे हमर मल्टीपल क्लासेस सब रही परिबो तो ये क्लासेस हमें केमते डिफाइन करियो तो जेतल हमें क्लासेस डिफाइन करिबा तो आइडेंटिफाई द when you are writing or designing a class first you have to identify the set of class that will constitute the software system mo software system pai कौन सॉफ्टवेयर कौन एप्लिकेशन दरकार तामु डिफाइन करी then determine the responsibility of the classes so when I design the class the first of all you have to find out what are the responsibility will be present then जितने मु मल्टीपल क्लास बनाऊची से क्लास भितर हमर रिलेशनशिप टा कोन रहइबो क्लास भितर रिलेशनशिप टा कोन रहइबो सेटा हमें आइडेंटिफाई करिवो determine the relationship or responsibility of each classes then interaction between the classes identify the attribute class तो बने देली से जेमते कि मु घर बने देली से घरे मु कोन कोन जिंस रखिबी सोफा गोटे रखिबी टीवी गोटे रखिबी दैट इज एसेट्स जेमते मोर क्लास बनी गला एबे से क्लास भितर मु कोन रखिबी बा से क्लास रे कोन इन्फॉर्मेशन डिफाइन करिबी सपोज मु स्टूडेंट पे गोटे क्लास बनेली तो स्टूडेंट रो मु कोन इन्फॉर्मेशन रखिबी से डिफाइन करिबी इट मींस लाइक I can store the student ID, student roll number, then what are the courses the student is taking a registration. So all the information I have stored over there. Identify the attribute and behavior of each classes. Identify the scope of the class member. जो member सब मु define करिवि से member गुडा को मु कोठी use करिवि scope of the member. The members where you have to use that member माने मु घर रो जो asset सब रखिली टीवी टा मु कोठी यूज करिवि डाइनिंग रे यूज करि परिवि कि गोटे हॉल रखते तादरे यूज करि परिवि सो I have to use my bedroom okay so there is a scope I can use this TV in my worship room washroom so it is an electronic device that is called the scope where you have to use that particular attribute से attribute गुडा को मु कोठी यूज करिवि सेठी मु डिफाइन करिवि so identify the scope of the member so when you are defining a classes हमें जेता बेला गोटे प्रोग्राम रे हमें मल्टीपल क्लासेस डिफाइन करि परिबा तो how you have to find out the relationship between the classes गोटे क्लास भीतर हमें relationship केमते find out करियो sum up part we identify the relationship between the person आमे तर कथावार्ता होचे बा गोटे लोक आ गोटे लोक प्रति जेमते बिहेवियर देखोची से बिहेवियर आ कथावार्ता भितरे आमे आइडेंटिफाई करि परिबा व्हाट आर द काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम व्हेन वी आर टॉकिंग विथ आवर फादर बाबांग सहित तो कथा हवा तो आमे टिके मोर रेस्पेक्टेबल वे रे आमे कथावार्ता हो मामांग सहित तो कथावार्ता हवा casually आमे कथावार्ता the way of behaving with our friends आमे सांग मानक सहित जेंति बिहेव करू that behavior is different from parents parent को सहित जो बिहेव करू फ्रेंड मानक सहित से बिहेव न करू नहीं when you talk with your teacher that is you can give more respect for them and you have more respect for them so based upon this behavior and based upon the way of talking you can identify what are the relationship between the particular classes and say behave ro ame jani pariba tanka relationship ta kon so how one class behave to the other class so based upon that we have to identify the relationship between the classes so let us understand how can I identify the relationship between the classes how you have to identify it so in the OOPS concept there are
four type of relationship is present. One is composition relationship, generalization relationship, utilization relationship, and instantiation relationship. So there are four type of relationship is present: composition, generalization, utilization, another is instantiation relationship. So four type of relationship we have. Now, composition relationship is what? Object include another object as its part is called as the composition relationship. It is called as the Hazer relationship. आमे कौन करछे ना शरबत बनाउछे गोटे ग्लास रहला चीनी गोळेले तो चीनीटा जतले से लेंबू पानी आ भीतर मिसुचे ताको शरबत कहबा मिठा जो खाउछे मिठा रे जदि चीनी न रहइबो कैन से इट इज ए स्वीट तो sugar is there with the what paneer item, then we can call as it is a sweet, or we can say it is a rasgulla. The chini ta na pakeva se rasgulla havan. Khiri banauchi tate sugar mixture khiri re ame sugar ta kadi daba, so nobody say it is a what khiri taku konti odiya taku jau boli kahi daba luna paki khaiba. So sugar is one component. When it is added with a different item, then that flavor has changed. If it is mixed with the sweet, we can say it is a rasgulla. Sarbat re misele, that is a sarbat or cold drinks. So I mean thumbs up piva, Pepsi piva. So we expect that is what? That should be what? Taste is like sweet. I expect करिबानी जोटा कि से सोडा पीले जमती टेस्ट आसीबो तो हमें से टेस्ट आइठी एक्सपेक्ट करिबानी. So we expect that it should be what? Good flavor, like it have the sweets over there. Okay, मैंने गोटे हमें आइटम जतले हमें देखि दो हम ब्रेन ने सेटा मैपिंग हे जाय से तार टेस्ट ता कोन माने हेइथिबो. ओके सेटा ऑटोमेटिक ब्रेन तार आइडेंटिफाई करनी. तो हमें फर्स्ट टाइम पे आइटम कहबा फर्स्ट हमें टेस्ट करिबा तो वी जस्ट गेसिंग दैट एटा कोन हेइ थाई पारे. तापर जतरा हमें हैबिचुएट हे जिबा से आइटम ऊपर देन वी नो द टेस्ट. Like when you are going to the Maharashtra, so they are having a common food bada pav. जेंते हमर एठी सका उठले इडली बोरा सिंगड़ा ए आइटम चले पूरी for the breakfast, so they are having a bada pav. Okay, मु ट्रेनिंग देले हमें फर्स्ट टाइम पे पाइलो, so I expect that so bada pav is like the flavor, maybe it is a flavor of aloo chop माने आलू चप भले हेतिबो सेटा that looks is different, but जेतले हमें खाइलो so it's just like a what, like हमें कहि पाए ब्रेड जेमति थाई से वाला ब्रेड ऊपर गोटे बेसन फेसन देखि से बनै छै ना ब्रेड चॉप पड़ा है तो ब्रेड चप भलिया. हां तबे से बड़ा पाव से कर गेले हमें ताको एक्सपेक्ट करतलो एटा आलू चप हेति. ओके, तो सी दैट मींस ब्रेन ने गोटे आईडिया आसी जे हमें जतले ता से तो धरो गोटे आइटम ऊपर तो हम ब्रेन ने से फ्लेवर टा पळे आसे. एठी होची कंपोजिशन रिलेशनशिप हमें कोन कहबा ना सुगर गोटे एमती आइटम जोटा के गोटे कंपोनेंट से जहा से तो मिसिबो सेरा मीठा बा सेरा स्वीट बोली कहै. खीरी हमें एक्सपेक्ट कोचे मिठा हेतिबो दरकार, खीरी रो मिठा कर दो सेटा के खीरी कहबे. चा जतबे पिउचे तते हमें कहबा बिना चीनी वाला चा दियो, और होची सुगर वाला चा हमें पिउचे. देखियो जो aged person and middle aged person, they are using what sugar free. Okay, and it gives you taste, and if you use it more then it makes you fat, tomorrow body weight be whatever, and you go for the diabetes part. Okay, so let's say it is the other part.
composition relationship is saying that जदि आमे फिगर रो बुझिबा जदि मो ए कार रो बॉडी गोटे अछि इंजन अछि मो इंजन टा जतरा काढी देबी कार टा को तापर कहबी भाई चला गाड़ी टा ताको चाहिले भी मु चलै परिबे बा इंजन टा नतले गाड़ी गोटे इंच आगु जीवन खाली ताको टान टान के नेबी ट्रॉली रे साइकिल ताको टान टान के नेकी जीवी आ जदि मु कहबी नै इंजन टा तले बड़ ताले BMW कार टा बॉडी टा अछि इंजन टा बाहर कर दे तो से BMW किछि काम नै तो साइकिल चले मु पहुंच जीवी से जगह तब मु नै नै इंजन टा रहउछि ताले इंजन टा इंपोर्टेंट इंजन टा नै खाली बुलीबी ताले मते कई कहबेनी जे ये BMW कार धर के बोलुछि कभी ये कोन गोटे मशीन टा धरि बोलुछि तब मु बाइक पछपटे बसे के BMW रो इंजन टा धरि बोली कोन हम कोन चलौछि कोन क्वाडी जाउ भाई BMW चलौ तो you cannot say that is a BMW. If both are there, engine and body is there, then you can say, it is a BMW car and the person is like high-fi person. मुझे तो खाली बॉडी टा धर के बुली गोटे जगह टिया फोटो उठेबी तार किछि वर्क नै सेटा जेमि फोटो शूट हेछि आ इंजन टा काढी के साइकिल कैरियर रे मारी के जदी बुलीबी ताल त से कहबी नै कोन आउछ ना BMW नै के जाउछ पछरे BMW रे इंजन अछि किंतु केही कहबे नै BMW नै के जाउछ when both are gathered body भी आसिला इंजन भी आसिला then yes that looks like this एटा को जे हाज रिलेशनशिप ये ता बिना बंची परिबनी ये ता बिना भी बंची परिबनी so this kind of relationship is called the हाज relationship तो जते बेला में कोन से क्लास डिजाइन करिवा गोटे क्लास आ गोटे क्लास रो गोटे कंपोनेंट हेति से क्लास बिना एक क्लास रो कोन सी एक्जिस्टेंस नै एग्जांपल न कोन हेई पारे हमर रियल लाइफ रे हमें जदी तुमको डेवलपिंग पे दिया जीवो ताले तमे एमतिया कंपोजिशन रिलेशनशिप तमे कोठी पाइबो तमे देखिबो नॉर्मली गोटे स्टूडेंट जते बेले कोनो सी ऑर्गेनाइजेशन ने एडमिशन करूची फॉर एनी कोर्सेस और फॉर एनी डिग्री so they taking the information of your personal information like parents your previous academic details and the specialization you want to do eta rahila 3 मास सरला एग्जाम हबो तापर तुम सेमिस्टर एग्जाम आसीबो सेउटु मोर सीजीपीए काउंट हला जेतर मो बीटेक करूची किबा एमसीए करूची तो मो सीजीपीए काउंट हबो सेमिस्टर वाइज so that is the actual factor माने जदी गोटे स्टूडेंट टा रजिस्ट्रेशन न नउची ताले से जो एकेडमिक टा मु कहा पई रखी तार कोनसी मूल्य नै स्टूडेंट र पर्सनल इंफॉर्मेशन रहिले ही एकेडमिक इंफॉर्मेशन आसीयो तो एकेडमिक इंफॉर्मेशन टा से पर्यंत अकामी जे पर्यंत गोटे स्टूडेंट रजिस्टर न करी वन स्टूडेंट रजिस्टर कला तार एकेडमिक इंफॉर्मेशन बा जो आगु आगु जो एग्जाम हबो ता पई से टेबल टा बा से इंफॉर्मेशन टा एक्टिव हो so that is a composed आउ जदि मु एकेडमिक इंफॉर्मेशन न रखिबी स्टूडेंट आसिला ता इंफॉर्मेशन रखि देले से पास आउट भी हे गला ताले ताको मु को सर्टिफिकेट देबी हाउ आई गिव ए ग्रेड and how I give a certified the person is like engineers is person is having a master degree so how I identify it so it is both are called as the composition relationship okay बुझी पालो composition Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay Yes. next is called the generalization relationship it is very important part how hame programmatically को यूज करिबा generalization relationship generalization relationship जेमति देखिबो गोटे छोटो छुआटी जतरे जन्म होउची हमको जारी ये माँ ऊपर जाइची ये बापा भली देखा जाउची ये दादा भली देखा जाउची ये जेजे बापा भली देखा जाउची that is correct if you compare with your parents or your generation you have some kind of similarity your face is matched
with your father, maybe with your mother, maybe your grandfather or grandmother. So something is matched over there. And some nature also you have to copy. It is not like that face appearance. If your face is not also matched, but your nature is matched over there. तुम्हारा nature टा 100% तादर match है. किसी nature add हो. If you compare, तापरे आमे कौन करो? हमारा निजोरा निजोत्व भी किसी अच्छी. According to the situation, according to the environment, so we have some kind of nature that is being developed with us. ताले चोरो चोरी करे, that doesn't mean से चोरो रो बापा भी चोरो ही थी, ता जेजे बापा भी चोरो ही थी. से उठो भालो लोग ही तो ये चोरो ही है. Situation. से जनते हमें कही बा Sachin Tendulkar is a great batsman and god of cricket, but हमें जदी compare कही बा से जदी god हेले, हम पू भी god हेती बात. से भी सिमती से 16 वर्ष खेली थिले, ये कौन 16 वर्ष से भी chance पाऊँ. सुनील गावस्कर, ताको से भी chance पाऊँ. But if you see that their face is similar, but the quality is not there. पापांकर जो क्वालिटी अच्छी तार से क्वालिटी नहीं. से बैट्समैन थे ले ये रहितला सचिन तेंदुलकर को जो बॉलर. Similar way, something we copied from our parent, but some nature also we have. We are developing this. That is ours. It is only for us, or it is only for me. Eta ei nature ta kebolo mo pakare achi. It is not there with my with the grandparent, with the father. But if you compare the face and some other nature, maybe your voice is also same. भाई भाई को भीतर voice टा same आसी जाए पारे, face टा भी same आसी जाए पारे. तो generalization is also saying that it share the functionality. गोटे class जदी रहिला ना गोटे software. तो देखो एबे तुम्हें मोबाइल फोन तुम्हें सब यूज करूचो, तुम्हें चिंता करो जेतल तुम्हें मोबाइल फोन चेंज करूचो, से मोबाइल फोन यूज करिया पे तुम्हें ट्रेनिंग नउचो. दरकार नहीं. यूज करी करी का में ते हैबिचुएटेड है हमको जो भी मोबाइल फोन धरती हमें ताको आराम से यूज करी परिबा. हमको कौन से ट्रेनिंग रा आवश्यकता नहीं. किछि मैनुअल्स रहउनी. मोबाइल फोन खोली दबो, बस डाटा ट्रांसफर, देन इट इज यूज्ड. केवल गोटे पिन टे थो आ वारंटी कार्ड थो, आउ ता भीतर आउ किछि नथि. Now if you back to the year of 2008 and 7 and 8, तो से समय जो मोबाइल फोन आसुतिला ता भीतर गोटे मैनुअल्स रहउतिला. तादरे लेखा होतला how to set the ringtone, go to this option, open this one, set the ringtone. How to change the background, how to send the message, सब डिटेल, सब ऑप्शन ना डिटेल सब लिखा होगा. And that option is also different. मुझे मोबाइल फोन कंपनी टू कंपनी डिफरेंट, सेम कंपनी रा डिफरेंट वर्जन मोबाइल फोन भी जदी आसेला तो सेटा भी ता ऑप्शन गुडा सब अलग अलग हो. बट एबे हमें जहाँ भी मोबाइल फोन देखिवा 7000 मोबाइल फोन देखिवा जहाँ फीचर अच्छी, 10000 देखिवा से फीचर अच्छी, 25000 भी शेयर रही माने using capability. I say they are using on the perspective of uses. I'm not saying that feature 7000 मोबाइल फोन फीचर आउ 25000 मोबाइल फोन फीचर डिफरेंट हो. कैमरा क्वालिटी अधिका थी, मेमोरी अधिका थी. But if you compare the feature is set. तुम्हें डेली बेसिस रे बहुत प्रकार अपडेट पाउथबो मोबाइल फोन. आज व्हाट्सएप टा अपडेट करो, आज फेसबुक टा अपडेट करो, आज जीमेल टा अपडेट करो. तो आमे जतबे गोटे वर्जन को आ गोटे वर्जन को जाऊ तार यूजिंग थिंग टा को कंप्लीट चेंज हे जाए, चेंज हे नता.
कॉल जतले रिसीव करी हमें तळ को ड्रैग करिवा डिस्कनेक्ट करले ऊपर को ड्रैग करिवा सेटा डिस्कनेक्टेड हे एटा होचे नॉर्मल जो कोन से मोबाइल फोन ने देखले सेम फीचर रहइबो बट कैमरा रा फीचर आगे दीटा फ्लैश लाइट जळियो पछरे दीटा लाइट जळियो क्लोज नबा बुखे मोड रे नबा बैकग्राउंड टा को हाइड करिवा ए सब हमको डिफाइन करियो पड़ता है तो जनरलाइजेशन कहे जे you have to share the structure and functionality to the other classes माने गोटे पेरेंट क्लास गोटे मूल क्लास थिबो से कोन करिवो तार स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिटी को अन्य को दबो अन्य जो क्लास अछि से ताठो फंक्शनलिटी को कॉपी करिवो निज पाखरे रखिवो प्लस सी कोन करिवो तार नुवा फीचर ऐड करिवो एग्जांपल नै जिवा विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज 10 तो एक्सपी और 10 को जदी कंपेयर करिवा इज देयर एवरीथिंग हैज चेंजेस नो सेठी भी गोटे विंडो ऑप्शन थिला सेटा को क्लिक कले विंडो टा देखौतिला एठी भी सेही विंडो ऑप्शन अछि सेही कीबोर्ड हमें यूज करू छे बट लुक एंड फील इज डिफरेंट कंट्रोल सी सेठी थिला एठी भी कंट्रोल सी कॉपी एठी आ गोटे ऑप्शन चेंज हे जाय कंट्रोल भी हला पेस्ट एक्सपी रे होतला 10 न होची 7 न होची 8 रे होची 11 भी होची but it is having some kind of security feature look and feel is also better so generalization saying that you have to share the common structure मु शेयरिंग करिवि मोर जो फीचर अछि भाई मो पाखर तो फीचर ने तो चाइल्ड कौन करिवो जेंति आमे पेरेंट मान कठार गुण आनिले कॉपी कले फेस कॉपी कले वॉइस कॉपी कले तांको नाटा भी कॉपी कले बट वी बिल्ड आवर फीचर माने मु निजर भी किछि गुण विकास कले द पेरेंट जदी ग्रेजुएट है मु मास्टर डिग्री कली so that is my speciality okay हमें देखिबा किछि पिला अछंती बाबा रिक्शा चलाउथिबे आईएएस ऑफिसर तो दैट मींस से तांगा हेरिडिटरी से रिक्शा चलाउ जे हां मु ऑटो चले तो एटा भी डिफरेंट है कंप्लीट तो ए जो जनरलाइजेशन कांसेप्ट में दीटा जिंस पाइबा गोटे होची जनरलाइज आ गोटे होची स्पेशलाइज जनरलाइज माने कोन करे जे कि तार सब गुण को शेयरिंग करे स्पेशलाइज कोन करिवो ना सेही जिंस को कॉपी करिवो आ निजर किछि जिंस यूज करिवो ताको कोआ जे स्पेशलाइज आ जे शेयरिंग कला ताको कोआ जे जनरलाइज माने एठी पेरेंट जे बापा रहले ताको कहबा जनरलाइज क्लास एंड वी आर कॉल्ड as स्पेशलाइज we copy the feature or we copy the nature from the parent we also having our new feature or new nature so that we are called as a specialized they are called as a generalized ebe choto pila mobile phone use korchon if you ask me ame choto bele amar mobile phone hota so I see the mobile phone at the class 9 but now the born baby jetale taku khaiba ko diaujchi ta agare bi mobile lagai he is knowing that एठी गोटे कोन डिवाइस अछि तो पिला माने छोटो बेला अक्वेंटेड हे होछु हमको जते बेले जो टिपा टिपी मोबाइल फोन जते स्मार्टफोन को हमें अपग्रेड हेले सो इट टेक्स सम टाइमिंग ए व्हाट्सएप कोन एमति केमति मैसेज पठे it takes some timing but now everybody is acquainted so ये जो ऑनलाइन क्लासेस अला if you ask for the KG student and class 1 student they completely know that how to operate and how to join in the Zoom and how to attend the class in the Google Meet they know everything the fast asla Zoom gote kon gote bada jinso now if you ask every kids they know how to use it they know how the schedule has come and when the exam is there and when the class is happening automatic they go to the WhatsApp and they just open and join the class I just give example my son okay so he is knowing all the things means that it is not I am saying that only my son it is for the every kids okay because of they are acquainted with the technology okay hame mobile phone use karile so they are using the mobile phone on the born basis is on the complete younger period they are using but तुम जतरा यूज करते हो maybe you are using on the
class 7 or 8 you know that there is a smartphone, but in your 10th class or plus 2 classes you are using the smartphone. But now everybody is using smartphone because of this pandemic in the last 1 2 to 3 years. So generalization helps to create a program. तो generalization कौन करे ना से तार प्रोग्राम टा को शेयरिंग करे, स्पेशलाइजेशन कौन करिवो ताको कॉपी करिवो आ नुवा क्लासेस बनेवो. एउठु ही हमर इनहेरिटेंस कांसेप्ट आसेला. एउठु ही हमर आसेला कोन सॉफ्टवेयर टा जो वर्जन आसे जेतला एंड्रॉइड आसेला तो फास्ट आसेला अल्फा बीटा कपकेक तापरे एबीसीडी डोनाल्ड्स एबीसीडी ई रे एक्लार्स ओके एफ रे फोरियो माने सबु नेम रे एबीसीडी एफ करके सब जो जाईची एंड्रॉइड जो वर्जन आछे इट इज अ नेम ऑफ ए डेजर्ट माने जलखिया बा चॉकलेट ना रे से जाईते एक्लार्स चॉकलेट ना रे गोटे वर्जन हेतला ओरियो गोटे हेतला ओरे मार्शमैलो ओके सो दीज आर ऑल द नेम ऑफ So gingerbread भी थिला गोटे सब. हां तो सबु लेटर वाइज ही सब चलते आ सबु जाक कोन होची ना गोटे डेजर्ट ना रे. ओके सो इट लुक्स लाइक सेम ना हमें जो वर्जन जीवा मोबाइल फोन जे कोन चेंजेस करे सब सेम हो. तो जनरलाइजेशन हमको हेल्प करे माने ये एते फ्लेक्सिबल कर दे. देखो आगुरो हमें जतला मोबाइल फोन चेंज करतला हमको मैनुअल्स पढिया को पड़तला, किंतु ए फीचर ए जो जनरलाइजेशन आ स्पेशलाइजेशन हम लाइफ को एते सिंपल कर देला जे हमें जिते मोबाइल फोन चेंज कले भी हमको ट्रेनिंग नवा दरकार. आगुर जिते बेले मोबाइल फोन चेंज होतला सबुटा बड़ हेडाक तला कांटेक्ट को केमति ट्रांसफर करी बस ताको किनो आको धरे कि खाता रे लेख तापर हमें ताको ने कि सेव करतले गोटे गोटे के तादर का नंबर गोटे मिस ही होतला. आ मोबाइल चोरी गेला तो गला अंध माने जो चेन्नई एक्सप्रेस जेंति थिला मोबाइल चोरी गेला बस कांटेक्ट नंबर कार मन नहीं. एबे बहुत इजी कारण सब कांटेक्ट नंबर हमें कोची स्टोर करछे गूगल ले स्टोर कर जीमेल ले स्टोर करछे जीमेल कांटेक्ट गोटे कांटेक्ट ऑटोमेटिक आसे से स्टोर हे गेलो. आ फोन स्टोर आगरो कांटेक्ट नंबर सिम ले स्टोर होतला, कांटेक्ट नंबर स्टोर होतला मोबाइल फोन में हजी गले कांटेक्ट नंबर गन. एबे कोन होची ना सेटा क्लाउड सर्वर स्टोर होची. मोबाइल फोन चेंज कर डोंट टेंशन जस्ट open the contacts or Truecaller then everything you are getting the names. So that is the benefit of this kind of generalization and specialization. Specialization से अपग्रेड हे चली छी नुवा फीचर ऐड करी चली छी हमर लाइफ टाको और फ्लेक्सिबल करी चली. एही कांसेप्ट रो ही इनहेरिटेंस आसेला आ हमर सॉफ्टवेयर रो सब जक अपडेशन आसेला. ये कहला जे हमकु आउ थरे रीराइट करिया दरकार नै अगेन कोडिंग लिखिया दरकार नै. छोटो चेंजेस दरकार त पूरा कर दियो. माने गाड़ी रे जति गोटे पंक्चर होईची सेही जगह रे मते पंक्चर टा मारो मते टोटल टायर टा चेंज करिया दरकार. जोटी प्रॉब्लम हेची भाई सेटा को मते डेवलप करो बस सेटा को तमे पैच कर दियो. ओके एटा जनरलाइजेशन कांसेप्ट बुझियला. जनरलाइजेशन यस सर. तो नेक्स्ट क्लास रे तुमको पढ़ाइबी यूटिलाइजेशन एंड इंस्टेंशिएशन रिलेशनशिप. क्लास मिस करिवो नहीं, एटा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक. एउठो टिके न हमें प्रोग्रामिंग भीतर को रियल प्रोग्रामिंग भीतर को पसिबा बुझियला. एटा क्लास टोटली मिस करिवो नहीं. नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपोर्टेंट. ओके केमिति इनहेरिटेंस यूज होबो पॉलीमॉर्फिज्म यूज होबो सेटा कहबी मिस करिवो नहीं.